So first is introduction. So introduction, so unit 1 and unit 2 will be covered by me. The unit 1 will contain the introduction to web engineering. What actually web engineering? What second is web programming versus web engineering. What is web programming? What is web engineering? The difference between both, we will see that. After that, we will see what is actually inside this web. So web is contained what? First of all, HTTP. The HTTP is old. Now we are using HTTPS. Second is URL. Web browser. Web engineering is nothing. Web application is nothing without web browser. Web server. SMTP server. Simple mail transfer protocol. ISP protocols, hyperlink, domain name services, XML, parser and internet-based services. All the services that will be provided by internet that we will learn. Web architecture. The overview about HTML. You already learn HTML. कहाँ पे पढ़ा था HTML? वेबसाइट बनाई थी ICT 2 में हमने ऑलरेडी HTML किया है. Where we are HTML5 is new for us. Latest technology is using HTML5. So then get and post data. Why we are using get and post? कहाँ पे यूज किया था get and post? Get post method equal to get, method equal to post. कहाँ यूज किया था? फॉर्म के मेथड में. Why we are using it? We have a data. We want to transfer this data from one page to another page. That's why we are using get and post. Anyone know the difference between get and post? The difference between get and post. क्यों यूज कर रहे थे मेथड इक्वल टू गेट, मेथड इक्वल टू पोस्ट? इफ यू वांट टू ट्रांसफर अ डेटा, इफ यू जो भी डेटा है ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर यूआरएल में दिखना है, सिक्योर मेथड चाहिए, सो वी आर यूजिंग पोस्ट फॉर दैट, so that whenever we transfer a data, जो भी URL होगा वहाँ पे name is equal to whatever the name password वो नहीं दिखेगा. That's why we are using method equal to post and method equal to get. Got it? याद आया कुछ या फिर bounce? याद आया bounce? Other people? जॉय, दर्शिल, सत्यम, आशुतोष, यश, सिद्धार्थ, रजनीश, माहिती, हिमानी, लतीफो, वेदांश, विकास, महेंद्र, अनिमेश. ICT 2 में किया था वही रिपीट करना है. बट HTML is contain HTML5. Get post data introduction to CSS. What is CSS? Why we are using CSS? CSS कहाँ पे यूज किया था? जल्दी बोलो यार. CSS क्यों यूज किया था? Am I audible? हाँ, स्टाइलिंग के लिए, for putting design style inside our website, we are using CSS. But we are using CSS 3 properties. So the advanced level, जो भी हमने जो किया था, that is the basic level. Now we are going to learn the current technology in the market. Okay. So it doesn't mean that HTML5 is current technology, CSS3 is current technology. Currently we are not using these things. We are most overly Node.js and everything is very popular for developing the website. So we will learn that also. Then how to create a responsive website. Abhi responsive. What is responsive website? Anyone know? Responsive website. Anyone know responsive? What is responsive website? Responsive design क्या होता है? Anyone? Responsive website.
See, have you observed something that whenever website structure exit, yes, exactly, that's what I'm saying. Have you observed that sometimes, yes, dynamic appearance change, very good. So what happens whenever we open our website in our PC, तो सब कुछ वेब, जैसे कि कोई बैंक की वेबसाइट है या कुछ है, तो पीसी में कैसे दिखेगी, फुल स्क्रीन है, सब कुछ बराबर दिखेगा, बट मोबाइल में क्या होगा, वी आर नॉट एबल टू सी दिस perfectly. So the responsive website is a type of website, a type of technology through which we can convert the way of looking of website dynamically. We no need to change any code, no need to change any design, nothing, but we are making that responsive design so that we can easily adapt the change in size. So PC में कैसे खुलेगा, मोबाइल में कैसे खुलेगा, this is the difference between the responsive website. So currently responsive website is very good, is needed in market. So that need of responsive website, so bootstrap loader and everything, JSON, bootstrap loader, everything that we're going to learn over here. Then introduction to JavaScript, jQuery, AngularJS, everything in detail. I really want to learn this because it is very important. Okay, so अगर ठीक है, तो वेब इंजीनियरिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्टार्टिंग का पार्ट तुमको पता है, यू ऑलरेडी लर्न दिस, बट something is new, something is very advanced that we will learn in this. Okay, so why web engineering and everything will cover in this first unit. Now unit number 2. The unit number 2 is containing PHP. What is the full form of PHP? Why we are using PHP? ICT2 में यूज किया था PHP. क्या है PHP? Full form of PHP? भूल गए? अरे PHP क्या है? PHP is a language that used to build a website and that will be used in HTML pages. So its full form is hypertext preprocessor. भूल गए? याद आया? Anyone? श्रव्य, अजित, अपूर्व, प्रवीण, सुनील, भावेश, अभिषेक, सौरव, यशवी, जिनेन्द्र, आशीष, देवांश. Okay, so this PHP associate array include require header, developing a dynamic content web page using PHP, session and cookies. Now tell me what is session and what is cookies. What is session? What is cookies? Sometimes the website will ask store your data in cookies. What was that? Session, cookies. Session and cookies. CSC वाले people मुझे EC वाले आंसर दे रहे, तुम लोग आंसर दो. What is session? What is cookies? Adit, Joy, Tanmaya, Satyam, Vikas, Mahendra, Priyanshi, what is cookies? What is cookies? छोड़ो. Database connectivity that we already learn. Okay. So तो हमने PHP MyAdmin में database connectivity किया था, अभी हमने student details form बनाया था. उसके बाद we connect the student detail form with PHP MyAdmin. Yes or no? Yes or no? Am I audible? Then reply. Database connectivity किया था, insert, update, delete, query, PHP MyAdmin के साथ कैसे connect करते हैं data, how to transfer a data, everything that we already know, but here यहाँ PHP MyAdmin तो हो गया, अभी Firebase, Microsoft, वहाँ पे कैसे connectivity करेंगे वो हम देखेंगे. Then how to view a data, record from database. There are some schema over there. तुमने already DBMS पढ़ा है, ठीक है, कैसे data access करना है,
then how to apply the query and everything that we will learn over here. Now the next is, and new is building of CERD application. Have you heard about CERD application? Anyone? Ajax you already know. Ajax नया नहीं है. How Ajax work, that we will see. Then case study on code management tool on GitHub, secure web application, usability of web application, accessibility of web application, introduction to model view controller, performance and optimization of web application. So basically तुम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये web engineering में we are already only talking about the web application, web development, website कैसे बनाना है. But why actually we require this web engineering? So unit 1 and unit 2 is clear now. Yeah, unit 1 and unit 2 that will be covered by me. The next unit is unit 3 and unit 4, which contain PHP framework, PHP platform, the background process, every background part that will be covered by the Sunny sir. Here I'm only focusing on the language part. Okay, so basically इतना समझ में आया? Yes or no? Please reply. Please reply. खबर पड़े છે कि નથી પડતી, बाउंस गયું. अब ये यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट करना है. नाउ वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग. सो भाई बुक के टर्म में वेब इंजीनियरिंग इज द वेब इंजीनियरिंग यूजेस साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू सक्सेसफुली डेवलप डिप्लॉय एंड मेंटेन द हाई क्वालिटी वेब सिस्टम एंड एप्लीकेशन. ये हो गई बुक की बात. Now what actually the web engineering? This is actually the web engineering. You already learned the software engineering last time. But already you have learned the software engineering. What software engineering contains? Reply. Rahul, Dipti, Jinendra, Adit, Joy, Tanmaya, Darshil, Satyam. तुम सब लोग क्या करो? सो रहे हो? प्लीज रिप्लाई. श्रव्या, अजिता, अपूर्वा, अभिषेक, यशवी, आशीष, देवांश, जीत, एकता, तुषार, वत्सल, विश्वजीत, मनीष, हर्ष, हर्षिल. नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ना है, वो भी बता दो. मैनेजमेंट टूल, yes it is a carry out like agile, but the main application is web engineering is just like software engineering, but it's not actually a software engineering. It adapts some part of software engineering. So what actually happened? The web engineering is term which contains software engineering, hypertext, information engineering, requirement engineering, system analysis and design, modeling, simulation, project management, testing, human computer interaction, multimedia. A combination of everything is become web engineering. Okay, इतना समझ में आया? ओके, सो हाँ बस ऐसे ही यस नो करते रहो प्लीज. ठीक है. सो okay, so web engineering is the process which used to create high quality web application. So web application is software engineering, but it's not actually a software engineering. It borrows so many software engineering fundamental concept principles. Okay, you have to, तुमको वेब एप्लीकेशन बनानी है, बट एक वेब एप्लीकेशन नहीं है. कोई एक कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम करो तो प्रोजेक्ट इज लिमिटेड के थोड़े एंड यूजर यूज करेंगे. जैसे कि कोई सिंपल कॉलेज के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाए तो इतना ही है कि वो कॉलेज के स्टूडेंट ही यूज करे. बट दिस वेब इंजीनियरिंग, इफ यू आर गोइंग टू डेवलप द वेबसाइट, दिस वेबसाइट इज गोइंग टू यूज बाय सो मेनी कम्युनिटी यूजर. एक यूजर नहीं है, बहुत सारे यूजर है, बहुत सारे कल्चर्स है. दे आर गोइंग टू यूज दिस वेब एप्लीकेशन. सो व्हाट थिंग दैट वी have to check while developing this website, that we need to learn in this web engineering subject. So the web engineering emphasizes a similar technical and management activity. There are difference in the way this activity carry out, but main goal is disciplined approach to development of computer based system with intent of provide satisfaction to each and every user. हमको ऐसी वेबसाइट बनानी है that will be satisfy, stakeholder is nothing but a user, each and that will be satisfied the requirement of each and every user.
take the example of Facebook. This Facebook is used by each and every community. अभी तो अपने मम्मी पापा भी Facebook लेके बैठते रहते हैं. So ऐसी डेवलप करनी है तो यूजर जिसको नहीं पता कुछ कि नहीं आता, that will also use this Facebook and this kind of application. So the main goal is to provide end product that satisfied all the stakeholders. Are you getting my point? Yes or no? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हम अकेले नहीं यूज करते, बहुत सारी कम्युनिटी के यूजर यूज करते हैं. सो द मेन गोल ऑफ वेब इंजीनियरिंग इज दिस ओनली. गॉट इट? यस और नो? अदर पीपल? तन्मया, दर्शील, तुम्हारा तो पूरे नाम मुझे याद रह जाएगी. ध्रुव, प्रियांशी, अनुपम, मनीमेश, महेंद्र, माहिती, वेदांश, संजीव. हाँ बहुत सारी थे. यस नो करिया करो प्लीज. ओके सो ठीक है, तो ये हो गया अपना वेब इंजीनियरिंग का मेन गोल. नाउ व्हाट विल हैपन इन पास्ट एंड व्हाट इज गोइंग टू कवर इन फ्यूचर currently. Okay, so in the past we developed web based application which contain, तो हम लोग क्या करते थे, in the past we developed the web based system which contain informality. ठीक है, informality. Okay, so first is हम ऐसी एप्लीकेशन बनाते थे which contain informality. अगर वेबसाइट के अंदर informality है तो it leads to ease of work. ठीक है, वो मैं समझाऊंगी क्या होता है. अर्जेंसी मतलब कुछ भी चेंजेस आए, जैसे कि तुमने वेबसाइट बनाई, मैंने चेक की तुम्हारी वेबसाइट, मैंने बोला ये नहीं है, तो तुम लोग क्या करते हो, अर्जेंसी में कुछ चेक करने के बिना ही कुछ ऐड करते रहते हो. जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने को बोला, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट आफ्टर वर्किंग एवरीथिंग मैंने देखा कि तुमने वैलिडेशन ही नहीं डाला. तो व्हाट, मैं तुमको बार बार बोलूंगी ये वैलिडेशन डालो, तो तुम लोग फिर से वो वैलिडेशन डालोगे ना एवरीथिंग. सो the first is informality, second is it leads to urgency, so it leads to action and rapid decision making. Third one is intuition, is intangible quality that enable you to feel your way through the complex situation. तुम लोग क्या करोगे, वन बाय वन कुछ भी नहीं, जैसे कि एंड यूजर ने कुछ बोला कि मुझे ये चाहिए, तो तुम लोग क्या, रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो तुम लोग प्रोडक्ट जो भी काम करते हो वो छोड़ के तुम लोग क्या करोगे, फिर से वो रिक्वायरमेंट चेक करने जाओगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वहां पे ऐड करनी है, क्यों ऐड करनी है. तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम. एंड थर्ड वन इज इट लीड्स टू ऑस्थेटिक फॉर्म एंड फंक्शन, मतलब डिजाइन ही बराबर नहीं है, कुछ बराबर नहीं है. सो जो भी पास्ट डेवलपमेंट है वहां पे इंफॉर्मेलिटी, अर्जेंसी, इंट्यूशन एंड आर्ट, दिस काइंड ऑफ problems. So this all problems approach can often leads to the problem of development of web-based system. Okay, this web-based system is not going to use by you only. The end user, so many user can going to use. अगर deploy करने के बाद ये सब problem आए तो it will be hectic to you only. So that's why we must require the web engineering to handle every situation. कि भाई कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कुछ प्रोसेस बाकी तो नहीं रह गई, टेस्टिंग बराबर हुई कि नहीं, मेंटेनेंस हुआ कि नहीं, वेबसाइट चल रही है कि नहीं. अगर यूजर ज्यादा हो जाए, जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टाइम पर एक ही जन फेसबुक यूज करेगा, बहुत सारे लोग हैं, सारे एंड एंटायर वर्ल्ड इज यूजिंग फेसबुक राइट नाउ. सो वी डोंट नो कि एक टाइम पर कितने यूजर हो गए, द यूजर में बी वेरी. So this load management, performance and everything must be considered in entire web engineering. So this is very important thing that we need to take care of that. So but some degree of requirement and gathering planning are necessary. So अगर एंड टाइम पर, जैसे कि अभी दो हफ्ते पहले एक प्रॉब्लम हुआ था, गूगल सर्वर डाउन हो गया. ठीक है, सो मैनी, हमारी भी एग्जाम चल रही थी, इन चालू एग्जाम में हमको कितनी प्रॉब्लम हो गई. तो अगर एंड टाइम में कोई प्रॉब्लम आए तो हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन. आधे घंटे में तो वापस चालू हो गया, राइट. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन कि भाई अगर एंड टाइम पर कोई प्रॉब्लम आए तो हाउ टू टेक केयर. सो दिस वाई वी नीड स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड एवरीथिंग टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ. So it all driven by the management and technical pattern. Art remain but must complement with solid design. So we have to first, instead, before going to develop any website,
we have to design that website, physically design, कौन से पेज के बाद क्या आएगा, ER diagram and DFD and everything. So we require that stuff to just maintain a flow, to maintain how we are going to work. See, तुम लोग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, तुमको लगा होगा यार ये क्या है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. विदाउट दैट वी कांट डेवलप एनीथिंग. अगर पता चल गया ER डायग्राम में हमको ऑलरेडी पता है, इसके बाद यही जाना है, ये फ्लो यही जा रहा है, यूजर फ्लो डायग्राम, DFD एवरीथिंग, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड आउट कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. गॉट इट? यस और नो, इतना समझ में आया? समझ पड़े છે? बाउंड જાય છે? રિપ્લાય. गॉट इट? यस और नो? स्टार्टिंग का है, थोड़ा बोरिंग लगेगा, उसके बाद कोडिंग आएगा, तब मजा आएगा. मुझे भी बोरिंग लग रहा है. समझ पड़ी? जॉय? तो रिप्लाय आपण कितनी बार केવાનું? हाँ, okay. So next thing, so we clear about what is web engineering. Now next is characteristics of web. Web engineering is comes from the term web only. So characteristics of web. These are all the characteristics having influence on the way we build web-based application. Okay, so first let's talk about in general web. So what actually this web contain, the characteristic of web. The web, first one is indisciplined technology, a transformative technology, indisciplined technology. It means कोई जरूरी नहीं है कि वेब एप्लीकेशन एक ही टेक्नोलॉजी में. HTML बहुत पुराना हो गया, अभी HTML कोई यूज नहीं करते हैं, बट ओल्ड, ठीक है. अभी लेटेस्ट वन, इतना जरूरी नहीं है कि वेब एप्लीकेशन एक ही लैंग्वेज में बनेगी. नई नई टेक्नोलॉजी आएगी. सो this web is indisciplined technology and transformative technology. So it involving technology. It means it contains new language, new standards, new protocols. पहले हम HTTP यूज करते थे. Now we are using HTTP, Hypertext Transfer Protocol Secure, which contain the new protocol. So it doesn't mean that whatever the standard we are using, that will be used in future. फ्यूचर में कुछ नया होगा, वी हैव टू चेंज विद द टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो एक ही लैंग्वेज पे स्टक नहीं रहते, हम लोग लैंग्वेज चेंज करते हैं. सो हाई इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी फॉर एवरीवन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. It doesn't mean that only one people can use it. Everyone can use that technology. So these are the characteristics. Now the next new characteristics. The web is big physically and culturally. What it means? The global consequence. It means global consequence. It means massive culture, so many cultures, बहुत सारे culture है. उसके सारे cultures के end user, this user contains some data, massive data. Each and every user having some information, name, email ID, everything. Each and every user having information, wisdom which what, which having collective thinking of many different people, institution, culture and nation. एक ही नेशन के बंदे नहीं है, बहुत सारे कल्चर के लोग हैं. तो ग्लोबल कंसिक्वेंसेस. द वेब इज बिग फिजिकली एंड कल्चरली. सेकेंड इज डेटा माइनिंग. व्हाट इज डेटा माइनिंग? एनीवन? मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो? सो बिफोर मशीन लर्निंग द डेटा माइनिंग इज वन ऑफ द टर्म. व्हाट इज डेटा माइनिंग? पहले ही बोला, ग्लोबल कंसिक्वेंसिंग, मैसिव डेटा इंफॉर्मेशन. सो नाउ टेल मी व्हाट इज डेटा माइनिंग. Anyone know what is data mining? Anyone? Data mining क्या होता है? What is data mining? Data mining is, one second. Data mining is a compilation of information from large scale, finding useful into large amount of data. Okay, extracting. Okay, very good. So this is nothing. So this massive data is nothing but a collection of information
From that collection of information, what we require, that is knowledge. From that collection of information, we extract knowledge from this information. It is called data mining. The data mining बहुत पुरानी टेक्निक, but it is important. बहुत सारे what to say, it's a large amount of data. That data is nothing but a part of information. From that information, we are extracting the knowledge. That technique is called as data mining. So data mining technique to merge information from unrelated web source. So advanced search engine. So next is advanced search engine to examine the universe of web source. वेबसाइट कल चलेगी कहाँ पे? वेब सर्वर के बिना वेबसाइट नहीं चलेगी. वी नीड अ वेब सर्वर. वेब सर्वर डाउन है तो वेबसाइट नहीं चलेगी. So that's why we need search engine. Do you know how Google search engine will work? Anyone? Google search engine कैसे काम करता है? गूगल पे तुम सर्च करते हो facebook.com, तो फेसबुक की वेबसाइट ही क्यों पहले आती है? कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, यूजर वर्ड फाइंडिंग, अदर somewhat similar. Next, anyone? Metadata of website. No, first सबसे पहले तो numbers of visitor. उस पेज के नंबर्स ऑफ विजिटर कितने अकॉर्डिंग टू द सर्च. पहले गूगल में सर्च कितने करते हैं, वो एक ही पेज बार बार कितने लोग विजिट कर रहे हैं. इट मीन समथिंग इज वेरी यूजफुल इन दैट पेज. कितने लोग विजिट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वो लेवल ऊपर आता है. ये वेब इंजीनियरिंग इट इज सो एडवांस सर्च इंजन इज वेरी मच नेसेसरी ओवर हियर. सो ये है नंबर्स ऑफ यूजर, जितने भी विजिटर है. डोमेन मैचिंग नहीं, एक विजिटर का पता था मुझे. वर्ड नंबर्स ऑफ कितने टाइम वो वर्ड हिट हुआ है. फेसबुक कितनी बार आया, उसके अकॉर्डिंग होता है ये. एक्सट्रैक्ट ट्रेंड्स जैसे कि बिजनेस, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, that could be discipline from one to more web source alone. Okay, so what are these characteristics? First is indiscipline. सबसे पहले तो कोई भाई एक ही टेक्नोलॉजी पे नहीं बस बैठे रहते सब. ट्रांसफॉर्मेटिव है, इन्वॉल्विंग है, हाई इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी है. दूसरा है कि भाई एक बंदा यूज नहीं करता, पूरा यूनिवर्स यूज करता है. तो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस, सो पूरा यूनिवर्स यूज करता है, मतलब मैसिव डेटा, इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाई वी नीड अ डेटा माइनिंग टेक्निक्स. वी नीड एडवांस सर्च इंजन. इफ यू वांट टू सर्च something, we must need advanced search engine for search every website. Okay, now next is web application. So web application is nothing. There are kind of web application. First one is complete website. Web application is nothing. It is complete website just like Facebook and everything, or any other thing, any other site. Google की साइट, मतलब अपने कॉलेज की साइड है या फिर दूसरे कॉलेज की साइड. इट इज कंप्लीट वेबसाइट. स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी विद इन द वेबसाइट. It might be complete website, or it might be contain specialized functionality within the website. It might be possible some websites contain information processing application. So these are the type of web application. So it contains this much of functionality. Now next is web app attribute. समझ में आ रहा है या बाउंस है? It's just an introduction. Now let's talk about the attributes. See, we are talking about web. So we must need a network for connecting this entire website. So we need intensive network which serve the end user. Okay, the first attribute of web app is network intensive. Second is concurrency. मैंने वो पहले ही बोला, it doesn't mean only one user use. A large number of users can use our website concurrently. That's why we need to maintain this concurrency attribute in this web application. Then unpredictable load. We don't know how many users going to use our website at a time. So may access the web page, okay, vary at a time. So unpredictable load. Fourth one is performance.
परफॉर्मेंस मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर बहुत सारे यूजर एक टाइम पर एक ही पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, we have to maintain a performance of our website that much good. It all depend on server. ठीक है, हमको सर्व करना है. अगर अच्छे से नहीं होगा, अगर किसी का पेज लोड ही नहीं हो रहा है, तो no one wants to use that website. No one will use that. So they might be switch the website. Okay, they don't want to use it. So this four main attributes: network, concurrency, unpredictable load, performance. Okay, so that it is nothing but a client server side processing. It must be fast. Performance is contained that. Second is available. Fifth one is availability. It's not necessary that this user and user can be access your website anytime, 24/7, 365 days. So availability is main goal. Next is data driven. समझ में आ रहा है? बाउंस जा रहा है? प्लीज रिप्लाई. हमने पहले क्या किया? हमने पहले देखा व्हाट इज वेब इंजीनियरिंग. वेब इंजीनियरिंग के बाद what are the drawbacks, what we are doing in past, what we are currently changing, that informately, urgency, institution, art, these are going to change. Then we see the characteristic, indiscipline, transformative, involving technology, big, these are the characteristics. Now we are starting with the web app. Now we are learning web attributes. So these are the attributes. The availability, data driven, hypertext media. So data driven means end user can access, upload, delete, download anything. What they can upload, a hypermedia, text, graphics. Where we are going to upload? We are uploading on Facebook, right? And everything, any website. So which contain hypermedia. So ultimately we are storing something on something on server. So we need, it is the data driven. So we need to maintain that data. Content sensitivity. So it doesn't mean कि normal हो गए. Now we required contain. It doesn't mean कुछ political contain or everything. So the social media contain, the web application contain very high sensitive content, and continuation, the continuous evolution. So dynamic content. It doesn't mean कि भाई आज इतने upload हुए हैं, next day उससे double upload हो गए. So we need to maintain that size कि भाई elasticity बढ़ानी पड़ेगी सर्वर की अपलोड करने की. You know what is elasticity? Have you heard? Cloud computing चल रहा है ना? Cloud computing and big data analytics पढ़ रहे हैं ना सब्जेक्ट ये? हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाउड कंप्यूटिंग में ये आएगा इलास्टिसिटी, प्लेटफॉर्म, so वो सारे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो सब कुछ आएगा. So these are the very important terms that we are using in this software engineering. Immediately it must be method and planning and design to implement everything. So immediately, then security. If we are putting something on website, it means we are trusting that website that it must be secure. So we need a security to develop this website. Protect the sensitive content of development. Security is very important measure right now. अगर secure नहीं है तो no one is going to use your website. So these are the attributes that we are going to दिमाग में रख के चलना है कि भाई हम अगर वेबसाइट बनाएंगे तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. So these are the key attributes that must important in any website. Okay. So sensitive content development and provide secure mode of data transmission. Okay. Strong security measure must be implemented throughout the infrastructure that support web app and within the application itself. Okay. So this is the attribute that we required. Now let's talk about web types. Okay. So कौन से type के web होते हैं? There are so many type of web. So first web app is informational. So informational web is ये दिख रहा है? Are you able to see this? Type of web category, ठीक है. Functionality और category of web based application. तो पहली कौन सी category है? The first category is informational. Okay.
So informational means it having an example of online newspaper, product catalog, news, report. So वो kind of website which contain newspaper, product catalog and everything. Okay, newsletter, online classified, online books. तो यहाँ पे read only process. It might be possible कि पूरी book दे रखी होगी, newspaper दे रखा होगा, कोई information दे रहा. We are not going to add anything. So that's why the first is informational. Second is interactive. The interactive means they're having interaction with end user. So kind of registration form, customized information, presentation, online games. These all are interactive type of web application. Third one is transactional. A transactional is what online shopping, Myntra and everything. You know Myntra transaction, online payment, PayPal. Have you heard about PayPal? Online reservation and everything. जहाँ पे money transfer होती, e-commerce website. That is nothing but a transactional. Second is workflow orientation. Online planning, scheduling, inventory management, status monitoring, supply chain management. Fifth one is collaborative work environment. So it contains collaborative to just like what to say. TeamViewer. TeamViewer is one of the example of that. Second, TeamViewer. Second is for the name. दूसरा भी है एक, I forgot. Okay. Third is online communication and marketplace. So it contains email, Facebook, media, WhatsApp, everything. So these are the kind of websites that we are going to use right now. Categories and everything. Okay. So what we learned in this subject, in short, we are going to learn everything in detail. How we are going to manage this entire website. That will be learned by me. That will be learned by us. And what is the platform and everything. This first two part will be covered by me. Now the second two part, which contain the PHP framework, MVC architecture, कैसे करना है, developer कैसे करना है, what tool are used to develop these services. Everything will be covered in third and fourth chapter. Here we are just talking about the coding part of this subject. So first two units contain the coding and any the theoretical details, and second two is containing middleware and everything that will be covered by Sunny sir. Got it? So what we learned today, we just see the introduction part. What is web application? Then we have seen the past of web development. Then we have seen the web app contain what characteristics. Then attribute of web app. Then the category type of web app. Okay. So from next time we will start from unit number 1, web programming versus web engineering, and this part. Okay. Next lecture कब है अपना? Next Friday को, right? Got it? Any doubt in today's lecture? Please reply. Web engineering पता चला है just like software engineering, but we must know how to manage everything, how to manage middleware, how to manage our end user. That's why we need web engineering. कुछ याद नहीं है, ये image देख लेनी. User, software engineer, hypertext is nothing but a language. Information and requirement engineering, system analysis and design, modeling, project management, testing, human computer interaction, multimedia, everything is contained in this web engineering. Got it? Yes or no? Please reply. समझ पड़ी? कि बाउंस करूं?